Good morning and welcome to the session 6 from the playlist of semiconductor devices and circuits. The topic is extrinsic semiconductor, and this session is in a continuation of the session number 5 in which we have studied about the intrinsic semiconductors. Now the intrinsic semiconductors which are normally used in the industries are made of silica or germanium, and the conductivity of the intrinsic semiconductor is very low at room temperature. So, because of that, the intrinsic semiconductors cannot be used in the electronic industry for making the electronic devices. Electronic devices को बनाने के लिए हमें जो सेमीकंडक्टर्स चाहिए उनकी कंडक्टिविटी जो रूम टेम्परेचर पे अच्छी होनी चाहिए. So, in order to increase the conductivity of the intrinsic semiconductor at room temperature, what we do is we dope these intrinsic semiconductors with a trivalent or a pentavalent impurity. And by doping the trivalent or the pentavalent impurity in these intrinsic semiconductors, that is silica or germanium, we are able to increase the conductivity of this intrinsic semiconductor substantially. So, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि दी पेंटावलेंट डोपेंट्स आर बेसिकली of three types, means these are the pentavalent dopants which are normally used in the making of this extrinsic semiconductors. So the pentavalent dopants are normally arsenic, antimony or phosphorus, and the trivalent dopants which are normally used are indium, boron and aluminium. Now in the case of pentavalent dopants, the atoms have got 5 valence electrons, and in the case of the trivalent dopants, the atoms have got 3 valence electrons. So now let us understand how the conductivity of this intrinsic semiconductor is increased by doping the pentavalent dopants or the trivalent dopants. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहां पर एक पेंटावलेंट डोपेंट है, उसका ये एक एटम है विच इज डोप्ड इन सिलिका. सो ये एक डोपेंट है. डोपेंट इट कैन बी अ पेंटावलेंट डोपेंट कैन बी आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस. तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए. नाउ सिलिका एंड द जर्मेनियम एटम, they have got 4 valence electron. तो ये हमें यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ. ये सिलिका के 4 एटम्स हैं. सो दिस डोपेंट एटम is surrounded by these neighboring silica atoms. These silica atoms have got 4 valence electron, and this is a pentavalent dopant, and the atom of this dopant has got 5 valence electrons. तो अब यहाँ क्या होगा? One of the valence electron of this dopant atom will combine with one valence electron of one silica atom. Similarly, ये एक जो एक valence electron है dopant का, ये एक दूसरे सिलिका एटम क्या जो valence electron है उसके साथ में combine हो रहा है. इसके बाद में ये एक और यहाँ पे एक dopant जो एटम है, इसका एक ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट विल कंबाइन विद अनदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर सिलिका एटम, एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट एटम इट विल कंबाइन विद अनदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिका एटम. सो इन दिस वे व्हाट इज हैपनिंग, one valence electron is left free. Now the ionization energy required to set free this free electron is very less, and even at room temperature this electron is free to move in the lattice. So in this way what we are doing is we are providing the conduction electrons by doping the impurities. तो जितना ज़्यादा मैं डोपिंग करूँगा, द मीन्स इफ द डोपिंग लेवल इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज, and thereby the conductivity of the
this intrinsic semiconductor will also increase. So extrinsic semiconductor is basically an intrinsic semiconductor which is doped with impurities, and this is done in order to increase the conductivity of the intrinsic semiconductor so that it can be used in the electronic industries. So in this way we increase the conductivity of the intrinsic semiconductor by doping the dopants. Now these dopants can be either pentavalent और ट्राइवेलेंट. पेंटावेलेंट डोपेंट्स के एटम्स में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ट्राइवेलेंट डोपेंट्स के एटम्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो यहाँ पे उसी चीज को मैंने लिखा है कि द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर. इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर वी यूज द पेंटावेलेंट डोपेंट्स. ठीक है, दैट इज इट कैन बी आइदर आर्सेनिक, एसबी और फॉस्फोरस. एंड इन द केस ऑफ this p-type semiconductors we use the trivalent impurities. In the case of n-type semiconductors we use the pentavalent impurities, and in the case of p-type semiconductors we use the trivalent impurities. So we will be discussing about these two types of extrinsic semiconductors in the next session. So thank you very much for joining this session, and in the next session we will be continuing with the same topic, but we will be discussing in detail about the n-type semiconductor and the p-type extrinsic semiconductor. So till then, have a nice day. Bye.